Good morning to all of you. Today topic is very important. Particularly some students are asking regarding to inorganic chemistry, particularly for NCERT textbook. So for your kind of information, last 10 years chemistry Neet exam, APMT exam, 99% of the questions are asking from NCERT textbook only, particularly for inorganic chemistry. So because still two to 3 days only left for Neet examination. So in precisely, we are going to discuss what are the important topics in inorganic chemistry, where students are mostly give the wrong answers. Chalo. Now, the first thing is structure of atom. Most important point, most 99% of the students are not covered in this syllabus. For your kind of information, for one electron species के लिए, for one electron species के लिए, for one electron species के लिए, energy order है, energy depends upon only n well. For example, hydrogen के लिए, for hydrogen atom, 1s is the least energy, then 2s and 2p, then 3s, 3p, 3d, because energy depends upon only n well. But multi-electron के लिए, electron के लिए, so energy depends upon n plus n value. अच्छा, no doubt, this n plus n value nothing but आप open इसको. But देखो यहाँ क्वेश्चन देखो, NCERT टेक्स्ट में ये क्वेश्चन देखो, energies of the orbitals in the same subshell, energies of the orbitals in the same subshell decreases with increase in the atomic number. Example देखो, हाइड्रोजन 2s है, लिथियम 2s है, सोडियम 2s है, पोटेशियम 2s है. 2s orbital of hydrogen atom is greater than that of 2s orbital of lithium, that of lithium greater than that of sodium, and so on. Because this is nothing but screening effect. Screening effect concept is here plays a very important role. But which are given NCERT textbook, 99% of the students are ignoring this one. Maybe they may ask the questions like this only, because which are taken in NCERT textbook only. So remember that for the same subshell is given energies of the orbitals in the same subshell, because these are previously asked questions only. For one electron species के लिए, multi electron के लिए, previously these questions are also asked. But NCERT textbook में देखो, ये NCERT textbook का question था. So remember, hydrogen 2s is more energy than lithium 2s, then sodium, then potassium. So this is very important. Next I go for next. Classification of elements and periodic properties. What are the important concepts we are going to discuss? देखो, Mendeleev's periodic classification, he left some gaps in periodic table. That gaps को Eka elements बोलते हैं. अच्छा, what is the Eka boron है? Eka aluminium है. So देखो ये वाला. The gap under aluminium and the gap under the silicon, all called Eka elements है. Eka aluminium, Eka silicon है. Mendeleev predicted not only the existence of gallium and germanium. अच्छा, Eka boron is gallium है, Eka aluminium. देखो, Eka boron है, Eka aluminium है, Eka silicon. Eka boron is scandium है, Eka boron is gallium है, Eka silicon is germanium. अच्छा, this is very important. They may ask the question, simple questions only. देखो next. अच्छा, most important thing, what is IUPAC name of the elements are greater than 100 but unfortunately 2020 NEET examination
they asked some questions regarding to the scientist names. Questions are asked like Mendelium. They're asking the question, what is it? Mendelium? Atomic number is 101. Acha Nobium, Laranicium. These are named scientist names. Seaborgium, Borium. Scientist names. Unluckily, unfortunately, 2020 NEET exam में this segment questions are asked. Match the following में. अच्छा, element name, element number is given. They asking the name regarding to scientist name. Who knows? They may ask any questions in 2020 NEET 1 exam, particularly from NCR textbook only. Now, how will you justify the presence of 18 elements in the fifth period of the periodic table? अच्छा देखो ये वाला simple है. These are all I extracted from NCR textbook in this questions only. अच्छा देखो first period में 1s only 1s orbital है. Second period में 2s 2p है. Third period में 3s 3p है. Fourth में 4s 3d 4p है. Fifth में 5s है, 4d है, 5p है. Sixth में 6s है, 4f है, 5d है, 6p है. 7s है, 5f है, 6d है, 7p है. देखो फिफ्थ पीरियड इज नथिंग बट डे वाला ना. फिफ्थ पीरियड हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? 1 5 3. अच्छा 1 5 6 plus 3 9 orbitals are there. Each orbital can accommodate maximum 2 electron. 9 into 2 18 elements are possible. ठीक है. अच्छा यहाँ 32 पॉसिबल, यहाँ 32 पॉसिबल, यहाँ भी 18 पॉसिबल है. 8 elements are possible. यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2. Very simple description. चलो नेक्स्ट. अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देखो दिस इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सट्रैक्शन वी कैन टेक द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है. अच्छा क्वेश्चन आस्क्ड है सिलिकॉन बेरिलियम मैग्नीशियम सोडियम फास्फोरस है. अच्छा दे आर आस्किंग द व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक कैरेक्टर मींस टेंडेंसी कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली इज मोर मेटालिक कैरेक्टर है. अच्छा इसमें मोर मेटालिक कैरेक्टर सोडियम है बिकॉज़ सोडियम में 2,8,1 है. अच्छा मैग्नीशियम 2,8,2 है. बेरिलियम इज 2,2 है, 2,4 है, सॉरी 2,2 है, 4 है. अच्छा सिलिकॉन इज 2,8,4 है, 14 है. अच्छा 2,8,5 है. अच्छा देखो which is more tendency is sodium है, तो easily can lose 1 electron है. Then इसके बाद मैग्नीशियम है. Then beryllium है also can lose 2 electrons very easily. But silicon है देखो silicon and phosphorus is अच्छा it is not readily lose 3 electrons only. Instead of that it can share 3 electrons only. So increasing order of the metallic character है, electropositive character है is very important, which are given in NCERT textbook. Next. Which of the following species will have the largest and smallest size only? Largest and smallest size only. अच्छा देखो largest size is magnesium. देखो in a period है, in a period particularly in a period है, sodium है, magnesium है, aluminum है. In a period size decreases है, size decreases है. So when compared to aluminum, magnesium is more size है. Yes, largest size is nothing but magnesium है, whereas smallest one is Al plus 3 है. Al plus 3 है. अच्छा Al plus 3 is having 10 electrons है, ये वाला भी 10 electrons है. Isoelectronic series में cation charge increases, size decreases only. मतलब ये concept है, ये फंडा आप याद करना. Next, which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होंगे. अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. अच्छा क्लोरीन है, क्लोरीन है. अच्छा वी नो हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है. इन ए पीरियोडिक ट्रेंड लेफ्ट टू राइट ये वैल्यू इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस है. क्लोरीन है.
अच्छा क्लोरीन के बाद है, क्लोरीन के बाद है फ्लोरीन है, क्लोरीन के बाद है फ्लोरीन है, देन नाइट्रोजन फास्फोरस है, अच्छा हाफ फील्ड है इज सल्फर है एंड लीस्ट इज फास्फोरस, फास्फोरस हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, half field orbitals means very difficult to add an electron. Achha, they are asking the question hai, because which are given NCERT textbook hai, which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which is the least electronegative. Least negative is phosphorus hai, achha more is nothing but chlorine, right? Chalo next. अच्छा ये पीरियोडिक ट्रेंड आप याद करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस है, सॉरी एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस है, ये एटॉमिक इंक्रीजेस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस है, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस है एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस है, कैसा इंक्रीज हो रहा है, कैसा डिक्रीज हो रहा है। अच्छा एक बार है बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन है, वंस वी कैन चेक दिस डायग्राम ओनली। अच्छा एटॉमिक रेडियस है ये वाला डिक्रीजेस है, मतलब लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस है, मतलब ये एरो मार्क है इंक्रीजेस है, ये एरो मार्क है डिक्रीजेस हो। अच्छा दिस पीरियोडिक ट्रेंड है, यू हैव टू रिमेंबर इट, देन एनी क्वेश्चन आस्क्ड यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन ओनली। आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस है, EN वैल्यू टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, EA वैल्यू टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस ओनली। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है वाला। Next, are the oxidation state and covalency of aluminum is same or different? अच्छा covalency is 6 है, because how many ligands are attached, that is called covalency. Covalency 6 है, but oxidation number and covalency not same है, but oxidation number आप कैलकुलेट करो, यहाँ oxidation number है x plus 5 into 0 plus क्लोरीन का 1 है, 1 into minus 1 is equal to plus 2, अच्छा x is equal to plus 3. Oxidation number covalency is entirely different for this. अच्छा we consider this which are given NCERT textbook, we consider it. Next is very important है, अच्छा फर्स्ट टाइम एंथैल्पी वैल्यूज 13 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए गया, ये 13 ग्रुप एलिमेंट्स के आप देखो वैल्यूज देखो। अच्छा सबसे ज्यादा क्या है बोरान का, बोरान के बाद आप वैल्यू टैलियम है, इसके बाद है इंडियम है, इसके बाद है गैलियम है, देखो वन सेकेंड अच्छा देखो ये वैल्यू बोरान के लिए, ये एल्यूमिनियम के लिए, ये गैलियम के लिए, ये वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए, ये गैलियम के लिए, ये इंडियम के लिए, ये थैलियम के लिए। अच्छा इसके बाद थैलियम है, थैलियम के बाद गैलियम का है, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम। अच्छा ये ऑर्डर आप याद करना। अच्छा जस्टिफिकेशन क्या है, थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट है, वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अच्छा डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन है। अच्छा प्रीवियसली क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड है, दिस इज आयोनिक रेडियस भी क्वेश्चन आस्क्ड है, आयोनिक रेडियस का भी क्वेश्चन आस्क्ड है। अच्छा बोरान के सबसे लीस्ट होना चाहिए, इसके बाद बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इसके बाद गैलियम का होता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अच्छा प्रीवियस लास्ट नीट का क्वेश्चन था, आयोनिक रेडियस का भी था। अच्छा गैलियम बिकॉज द डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन इज लेस साइज ओनली, very difficult to remove the electron only. These two points are very important regarding to the NEET examination के लिए। Next, considering the elements boron, aluminum, magnesium, potassium, the correct order of their metallic character. अच्छा, this is also NCERT textbook exercise में question था।
अच्छा, सबसे ज्यादा मोर मेटालिक इज पोटाशियम है, 2,8,8,1 है, वैलेंशियल व्हिच इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है। अच्छा, पोटाशियम का ज्यादा है, ऑप्शन देखो, पोटाशियम का ज्यादा, एक ही ऑप्शन में था, एक ही ऑप्शन में था, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरान। सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस क्या किसका होता है? इस केमिकल बॉन्डिंग में देखो, अच्छा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, NO का भी था, N2O का था। अच्छा, सुपर ऑक्साइड है, KO2 है, सुपर ऑक्साइड का भी था, एंड ClO2 था। These are odd number of electron है। अच्छा, so many times का क्वेश्चन asked करे, odd electron molecules है, these are odd electron molecules है, इन NCERT टेक्स्ट बुक में कंप्लीट दिया odd electron molecule के लिए। नेक्स्ट, ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, NH3 NF3 which is a more dipole moment is NH3 होना चाहिए, which is a more dipole moment is NH3 होना चाहिए when compared to NF3. So reason is here all are same direction है, all are same direction, here additive है, dipole moment are additive है, here additive है, here not additive है, because देखो these directions are different, this direction is different only. That's why ammonia is a more dipole moment when compared to NF3. There so many others also there, but I go before going to the NEET examination, I will give this my priorities because which are taken in NCERT textbook, right? So dipole moment के लिए ये options है, because dipole moment 0 किसका होता है? अच्छा, planar molecule का 0 होता है, BF3 0 होता है, CO2 0, CCl4 0, ये सब कुछ I think everybody knows that. But most of the questions are students, those are ignoring in NCERT, they will ask the questions only, right? अच्छा, one more question also asking है, like NH3 is the pyramidal line, NCH3 taken thrice is also pyramidal line, but SiH3 taken thrice is a planar molecule line. अच्छा देखो, ये pyramidal है, sp3 ये pyramidal है, sp3 ये pyramidal है, sp2 ये planar है, ये planar है, ये pyramidal है, this also pyramidal है. This is because of that reason is nothing but back bonding है, इसमें back bonding है, इसमें back bonding है, back bonding is possible, back bonding is possible, इसमें there is no back bonding also. So one more है, लुईस एसिडी कैरेक्टर का क्वेश्चन है, लुईस एसिडी कैरेक्टर का क्वेश्चन है। Now Bi3 is more acidic than BBr3, then BCl3, then BF3. अच्छा, again reason is nothing but back bonding है, again reason is nothing but back bonding also. अच्छा, this kind of questions are frequently asking in NEET examination or any competitive examinations, sir, because which are taken from NCERT textbook only. Next, अच्छा, before we are in order to calculate bond order also, everything in order to anything. अच्छा, the important thing is a sequence है. अच्छा, when we are using this sequence है, the total number of electrons less than or equal to 40. Or 2s2p mixing is possibility there. We are what is it asking? 2s2p mixing is possible. Then you have to follow this order. Because of this order only we can, if any molecular orbital having unpaired electron is paramagnetic, paired electron is diamagnetic only. We have to follow this only. Right? Then if this, when this order you have to follow, when this order you have to follow, 2s2p mixing is not possible. 2s2p mixing is not possible. Mixing is not possible. 2s2p mixing is not possible. Total number of electrons greater than 14 electrons. Only you have to follow this one. You have to follow this one. Right? अच्छा देखो, for example, I think previously asked questions का bond order है, stability है, bond length है. अच्छा, this is a very simple है. Bond order is directly proportional to bond energy and stability, inversely proportional to bond. Inversely proportional to bond. Alright. अच्छा, some peculiar है. Previous class question some peculiarity है.
अच्छा C2 मॉलिक्यूल में all bonds are pi bonds only, there is no sigma bonds. C2 मॉलिक्यूल का प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन था C2 मॉलिक्यूल के लिए। अच्छा C2 मॉलिक्यूल में all two are pi bonds only. अच्छा डबल बॉन्ड, अच्छा दिस इज आल्सो pi bond है, दिस इज आल्सो pi bond C2 मॉलिक्यूल के लिए। अच्छा CO प्लस CO बॉन्ड ऑर्डर है 3 है। अच्छा CO प्लस बॉन्ड ऑर्डर इज 3.5। अच्छा इंस्टेड ऑफ 2.5 दिस 3.5 होता है CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर होगा। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। अच्छा फ्रीक्वेंट लास्ट क्वेश्चन है O2 का, O2 प्लस का, O2 2 प्लस 2 का, अच्छा O2 माइनस का, अच्छा O2 2 माइनस का। अच्छा ये बॉन्ड ऑर्डर 2 है, प्लस मींस 2.5 है, 3 है। अच्छा ये वाला 1.5 है, ये 1 है। अच्छा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड इज अ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ओनली। लाइक N2 मॉलिक्यूल का N2 है, N2 प्लस है। अच्छा इंटरेस्टिंगली हियर N2 3.0 है, ये वाला 2.5 है, ये वाला 2.5 है। अच्छा which is most stable, which is unstable means more number of electron anti-bonding orbital is unstable है, less number of electron anti-bonding orbital is most stable whenever bond orders are same. The bond orders are different है, bond order directly proportional to bond energy only, stability only. So stability ask bond order का and ये वाला क्वेश्चन आस्क कर। and सिग्मा बॉन्डिंग के लिए, सिग्मा बॉन्डिंग के नोडल प्लेन्स आर 0। अच्छा सिग्मा स्टार के लिए नोडल प्लेन्स आर 1, पाई के लिए नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आर 1। अच्छा पाई स्टार के लिए नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आर 2। अच्छा क्वेश्चंस आर दे में आस्क केमिकल बॉन्डिंग में, MOT में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड लाइक दिस। अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन है, आई सेड ऑलरेडी compare the relative stability. Relative stability means bond order is directly proportional to stability one. Stability one. ये वाला O2 माइनस का 1 है पेरोक्साइड का, सुपर ऑक्साइड का 1.5 है, ये वाला 2.5 है, ये वाला 2 है। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर इज मोर है, कौन है? बॉन्ड ऑर्डर इज मोर O2 प्लस है। अच्छा स्टेबिलिटी ऑर्डर इज O2 प्लस इज मोर स्टेबल देन O2 माइनस देन O2 2 माइनस। अच्छा ये वाला बॉन्ड ऑर्डर का भी एंड स्टेबिलिटी का भी। अच्छा बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? अच्छा आयोडाइज्ड कंपाउंड्स में देखो, अच्छा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन है देखो, हाई प्यूरिटी ऑफ द hydrogen prepared by using this barium hydroxide solution between nickel electrodes है, high purity है। But electrolysis is nothing but common process, is nothing but electrolysis में, electrolysis में ये वाला process है, but commonly this is a very important है। High purity of iodine is obtained by electrolyzing warm aqueous solution, very important। आप याद करो NCERT का मतलब रटना पड़ेगा, NCERT का लाइन टू लाइन रटना पड़ेगा। अच्छा this is expecting question what I am telling you। नेक्स्ट हाइड्रोफॉर्मुलेशन का देखो, अल्कीन कंटेनिंग सपोज 3 कार्बन 4 कार्बन, सपोज 3 कार्बन, देन ऑल्डिहाइड कंटेनिंग 4 कार्बन आएंगे, हाइड्रोफॉर्मुलेशन है। अच्छा विच आर आल्सो गिवन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। हाइड्रोफॉर्मुलेशन के लिए सपोज मैंने प्रोपीन लिया, प्रोपीन को हाइड्रोफॉर्मुलेशन किया। अच्छा कंटेनिंग ऑल्डिहाइड 4 कार्बन ऑल्डिहाइड है, CH3 CH2 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 4 कार्बन ऑल्डिहाइड है, टेक 3 कार्बन ऑल्कीन, एस्टर होमोलोगस ऑल्डिहाइड इज obtained, हाइड्रोफॉर्मुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट है, 15th ग्रुप है, 16th ग्रुप है, 17th ग्रुप है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा 17th ग्रुप में HI बॉइलिंग पॉइंट है, HI HBr HCl, बट HF ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इस बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। अच्छा इनवर्स इज वोल्टाइल ऑर्डर है। अच्छा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF इज मोर बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा 16 ग्रुप एलिमेंट में है भी सेम, H2DE H2Se H2S। अच्छा देखो H2O इज मोर बॉइलिंग पॉइंट,
but here bismuthine है, stabine है, NH3, this is somehow different है, ASH3 and PH3. This is boiling point order है, आप याद करो ये boiling point order का. अच्छा, most of the questions are asking in groups also, right? चलो ये वाला very important पढ़ना. Yes, types of water they may ask. This is called coordinated water, this is called interstitial water, and this is called hydrogen bonded water. Which of the following is an example for coordinated water? Which of the following is an example for interstitial water? Which of the following example for hydrated water? These are examples for this one. Chalo next. Actually, you know, there are two methods: removal of temporary hardness, boiling method, direct boiling method, second Clark's method. Because previous last question है Clark's method. Clark's method में क्या ऐड करना? Lime ऐड करना. You are adding lime है. अच्छा, for reanimation, temporary hardness is because of calcium bicarbonate or magnesium bicarbonate. The water sample containing calcium bicarbonate, magnesium carbonate, we are adding lime ion, convert into insoluble PPT, means insoluble calcium carbonate को filtrate करेगा. Residue is calcium carbonate filtered is nothing but pure water. So this is a method. Clark's method में they ask what is the chemical is, lime is used है. अच्छा, Kalgan का process है, ये वाला question है, they may ask what is the Kalgan, they may ask. Kalgan is a permanent removal of permanent hardness. This temporary hardness के लिए, ये permanent hardness के लिए Kalgan है, permanent hardness के लिए. अच्छा, Kalgan ऐसा भी लिखेगा Na2, Na4, अच्छा PO3 taken 6 times. Kalgan, which is permanent, is a permanent method है. Permanent removal of hardness of permanent hardness of the water removed by using Kalgan method है, very important है. Like, चलो next. अच्छा, ion exchange method, resin method, geolite है, permitted process है, geolite है, very important है. What is geolite है? Hydrated sodium aluminum silicates. Hydrated sodium aluminum silicate is nothing but geolite है. अच्छा, Na2, Al2, Si2, O8 dot XH2, this is called geolite बोलते हैं. Hydrated sodium aluminum orthosilicate is nothing but geolite है. Permitted process बोलते हैं. These are very important. If suppose this water containing either calcium ion or magnesium ion है, then water में sodium आएंगे and chemical में calcium magnesium जाएंगे. So this is a अच्छा, this theoretical question they may ask. Now, industrial method है, preparation of H2O2, electrolytic oxidation, acidified sulfate solution है. This is industrial method है. They ask the question, what is electrolyte है? Dilute sulfuric acid is electrolyte only. This is a given in NCERT textbook होता है. Anhydrolysis gives hydrogen peroxide, is very important है. And industrially it is prepared, this is very important है. Industrially it is prepared auto oxidation of 2 alkyl anthraquinones है. Auto oxidation है, very important है. ये वाला अच्छा देखो, ये auto oxidation है. Auto oxidation है ये वाला. What is the starting compound? They may ask the question. What is the starting compound? They are asking the question. ये वाला starting compound है. 2-ethyl anthraquinone है. अच्छा, 2-ethyl anthraquinone formed है. H2O2 plus oxidized product is nothing but quinone आता है. Quinol to quinol है. अच्छा, quinol कैसा होता है ये वाला? ये वाला quinone होता है. अच्छा, don't confuse it. Don't confuse. अच्छा, ये ethyl होता है, C2H. अच्छा, but in this method we get how much concentration? Only 30% of H2O2. Right? चलो. Yeah. Now, gas phase में क्या होता है? Solid phase में होता है. ये open book structure है, no doubt. Everybody knows that. अच्छा, bond angle, dihedral bond angle है. Dihedral bond angle है, कितना होता है? 111 है. 111.5 है. ये कितना होता है? 90 है. Solid phase में 90. क्यों कम होता है? यहाँ association है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए कम होता है. सो देखो, dihedral एंगल है 90 है, ये dihedral एंगल है 110. इसको क्वेश्चन से डायरेक्टली रखना पड़ते हैं इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का.
पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम में आप देख लीजिए, बाय प्रोडक्ट में वाटर होता है। अच्छा, दीज आर ओनली गिवन है, बाय प्रोडक्ट में वाटर होता है। कैन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन एसिडिक मीडियम में। अच्छा, रिड्यूसिंग नेचर एसिडिक मीडियम में आपको वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों आता है, देखो। अच्छा, अदरवाइज यू कैन चेक इट, ये +7 to +2 रिडक्शन ओनली। अच्छा, -2 to +6 ऑक्सीडेशन ओनली, +2 to +3 ऑक्सीडेशन ओनली। बट सिंपली याद करना, ऑक्सीडेशन में ऑलवेज वाटर इज ओनली बाय प्रोडक्ट है। ऑक्सीडेशन में कैसा होता है रिएक्शन, H2O2, अच्छा H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, अच्छा रिडक्शन में H2O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन है, H2O प्लस ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम में, देखो बेसिक मीडियम में वो H- है, एसिडिक मीडियम में वाटर मालिक है। बट रिड्यूसिंग एक्शन बेसिक मीडियम में देखो ये पक्का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पक्का है। आप याद करना है, सिंपल से याद करना। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर में बाय प्रोडक्ट देखो वाटर एंड रिड्यूसिंग में वाटर एंड O2 है। नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट्स का देखो। अच्छा, दिस नॉट ओनली 1A ग्रुप एलिमेंट है, 2A ग्रुप एलिमेंट के लिए सेम है। हाइड्रेशन एनर्जी, अच्छा इसका हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, कंडक्टिविटी। अच्छा देखो, दिस लिथियम इज डी लिक्विसेंस है, लिथियम क्लोराइड डी लिक्विसेंस है, Li2Cl.2H2O, MgCl2.6H2O। I think फ्लेम कलर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। लिथियम के लिए क्या है, क्रिम्सन रेड है। अच्छा, सोडियम के लिए गोल्डन येलो है, लीला वायलेट है, रेड वायलेट है, ब्लू वायलेट है। अच्छा, ये छोड़ दो, एंगस्ट्रॉम मींस छोड़ दो, बट कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट है, कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट है। बट इन केस ऑफ 2A ग्रुप एलिमेंट्स है, इन केस ऑफ 2A ग्रुप एलिमेंट्स है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम not respond flame test। अच्छा, कैल्शियम के लिए ब्रिक रेड है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम क्रिम्सन रेड है, अच्छा बेरियम एप्पल ग्रीन है। अच्छा, एक साथ आप याद करो। अच्छा, बेरिलियम मैग्नीशियम नॉट रिस्पॉन्ड फ्लेम टेस्ट है, आप एक साथ याद करो इसे, राइट। चलो, अच्छा ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया, alkali metal liquid ammonia solutions are blue in color only. These are deep blue color solutions only. Due to presence of ammoniated cation and anion only. Cation, this is mixed conductor also. Example for mixed conductor also. Paramagnetic character also. When concentration is less than 3 molar है, अच्छा your concentration of ammonia is less than 3 molar है, अच्छा greater than 3 molar है, अच्छा it color changes into bronze color है, डायमैग्नेटिक होता है, बट ये पैरामैग्नेटिक है एंड इज गुड कंडक्टर है, इज अ डायमैग्नेटिक होता है। देखो ये वाला, द सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक एंड स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हैविंग एस, दिस इज एमाइड फॉर्म होता है। अच्छा, ये वाला देखो, इन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंजेस इनटू ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, ये वाला इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अच्छा नॉट लिथियम क्लोराइड है एज वेल एज मैग्नीशियम क्लोराइड है, बोथ आर डी लिक्विसेंस है। डी लिक्विसेंस मींस दिस इज व्हिच कैन अब्सॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल चेंजेस इन स्टेट ओनली, दिस इज कॉल्ड डी लिक्विसेंस होता है। Whereas other alkali metals chloride do not form hydrates, this is very important है, other alkali metals do not form this one। अच्छा वेरी देखो, ये डिफरेंशिएशन देखो, अच्छा लिथियम नाइट्राइड गिव्स लिथियम ऑक्साइड NO2 plus O2, अच्छा NO2 O2 बोथ आर पैरामैग्नेटिक है,
both are paramagnetic है, but remaining organic metal gives NO2. Like also sometimes questions are asked, lithium carbonate only unstable है, lithium oxide and CO2, remaining 1A group elements are stable on heating only. Stable on heating. This kind of questions are which are given NCERT textbook, very important है before going to the examination, 2 days before है, 1 day before है, अच्छा 2 hours before है, this you can go for it, very helpful for you. अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैथोड का रिएक्शन है, एनोड का रिएक्शन है, देखो कैस्टोनिक कैलकुलर प्रोसेस में, अच्छा mercury is cathode, देखो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट है, mercury when mercury is a cathode, mercury is anode only, very important reactions है. अच्छा ये देखो सोडियम में मार दूंगा, राइट. अच्छा here mercury is a cathode है, सॉरी here mercury is outer compartment, mercury is a cathode है. अच्छा inner compartment में mercury is a anode, in inner compartment mercury is anode, intermediate है, mercury is intermediate compound anode. अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है. नाउ देखो मोस्टली दे आर आस्किंग द क्वेश्चन है डेंसिटी का रिगार्डिंग. अच्छा डेंसिटी देखो, ये वाला डेंसिटी का फैक्टर क्या है. अच्छा मेल्टिंग पॉइंट है, वी नो मेल्टिंग पॉइंट नॉट रेगुलर ट्रेंड होता है. अच्छा नो नीड टू मग अप द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, बट डेंसिटी है, डेंसिटी 2A ग्रुप एलिमेंट्स के लिए डेंसिटी है, 2A ग्रुप एलिमेंट्स के लिए डेंसिटी देखो. अच्छा सबसे लीस्ट किसका है, 1.5 है, किसका है, कैल्शियम का, देन मैग्नीशियम का, देन बेरिलियम का, देन बेरियम का, स्ट्रांशियम एंड बेरियम. इनके सब 1A ग्रुप एलिमेंट है, डेंसिटी का टेंडेंसी क्या होता है, डेंसिटी है लिथियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, सीजियम है. अच्छा 1A ग्रुप एलिमेंट है इंपॉर्टेंट. डेंसिटी का फैक्टर व्हिच आर द फॉलोइंग इज डेंसिटी करेक्ट आउटपुट, देख क्लास, राइट. अच्छा डेंसिटी फैक्टर है, दे विल आस्क डेंसिटी का सॉल्यूशंस आर क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिगार्डिंग टू 1A 2A, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा ये देखो ये वाला है बिकॉज़ अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम ये पोटेशियम. अच्छा ये वाला एब्नॉर्मलिटी देयर इन केस ऑफ दिस टू ऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दैट. नेक्स्ट beryllium halides are essentially covalent and soluble organic solvents. Beryllium chloride change structure in solid state. अच्छा ये solid state में है, solid state में beryllium is undergoes sp hybridization है, beryllium is a solid, this is solid state में है. अच्छा vapor state में डाइमर होता है, vapor state में डाइमर होता है, vapor state में डाइमर कहता है. देखो इन वेपर फेज है, ये डाइमर होता है. डाइमर कैसा होता है देखो यहां मैं लिखूंगा, अच्छा BeCl ऐसा होता है, डाइमर होता है. अच्छा एक और BeCl ऐसा डाइमर होता है, BeCl. अच्छा यहाँ हाइब्रिडेशन कितना है, sp2 का हाइब्रिडेशन है, देखो ये sp2 हाइब्रिडेशन, यहाँ भी देखो sp2 हाइब्रिडेशन. अच्छा ये 1200 केल्विन से ज्यादा हीट करो, BeCl जो मोनोमर है. अच्छा मोनोमर में sp हाइब्रिडेशन है, डाइमर में sp3 है. अच्छा देखो ये वाला sp3 हाइब्रिडेशन है, सॉलिड स्टेट में sp3 हाइब्रिडेशन है. अच्छा ये टेम्परेचर है. अच्छा this is into linear molecule at a high temperature at about 1200 Kelvin. and ये वाला इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए 8H2O डिलिक्विशन सब्सटेंस है, कैल्शियम के लिए 6H2O है, स्ट्रांशियम के लिए 6H2O है. अच्छा एनी क्वेश्चन दे में आस्क यू बिकॉज़ व्हिच आर गिवन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है. सॉलिड स्टेट में देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड पे ऐसा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का डाइमर होता है, ऐसा देखो
अच्छा AlCl3 है, एक Al है, ये वाला ये डाइमर होता है ना, ये डाइमर में sp3 रेडिएशन है। बट एल्यूमिनियम क्लोराइड में आप लोग क्या होता है, ये AlCl3 क्या होता है, ये sp2 रेडिएशन है। अच्छा जस्ट लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन दे में आस्क यू। Now why does the solubility of alkali earth metals are hydroxide? Generally देखो is very important, solubility of oxides and hydroxides of 2A group elements increases from top to bottom, increases from top to bottom, increases from top to bottom, from top to bottom, increases from top to bottom. देखो देखो anion being a common, the cationic radius will influence the lattice enthalpy. Since lattice enthalpy decreases because lattice energy inversely proportional to such of the cation only, such of the cation increase lattice energy decreases only, that's why solubility top to bottom increases होता है। but ये reverse होता है। अच्छा other than oxide hydroxide, maybe oxalate ion, maybe sulfate ion, maybe bicarbonate ion, maybe carbonate ion, solubility top to bottom decreases only. Yes, solubility decreases from top to bottom, from top to bottom. Other than oxide hydroxide, मतलब maybe oxalate ion है, maybe carbonate ion है, maybe sulfate ion है, maybe halide ions है, etc. अच्छा ये compared to anion size is much larger है, so lattice enthalpy will remain almost constant within a particular group है, so hydration enthalpy decreases down the group है, so whenever hydration energy decreases down the group है, the solubility will decrease automatically. So remember अच्छा whether they are asking reason or not, but they are asking the question है which of the following is the most soluble. They may ask the question like BeSO4, like MgSO4, or like CaSO4, like BnSO4, which is a more soluble है। अच्छा solubility top to bottom decreases, ऐसा question they will ask. Next, अच्छा what is a raw material in cement है, they may ask the question है, cement है, limestone है, clay and gypsum also. अच्छा gypsum पर हाँ setting of the cement है, gypsum also used है raw materials, so generally limestone and clay. अच्छा they are asking the ratio, what is the ratio? The ratio of silica to alumina, it should be 2.5 to 4 होना चाहिए, and the ratio of lime to total oxides of the silica and aluminium, it should be 2 होना चाहिए। ये ratio देखो, silica to alumina, ये ratio होना चाहिए in between 2.5 to 4 होना चाहिए, then good quality of the cement. But lime to remaining oxide, the ratio should be is equal to 2, then good quality of the cement is said. And the cement, what is the cement? The raw materials are used in cement, this is very important. Now, अच्छा 13 group element में I said ना atomic radius है, अच्छा बोरान है, इसके बाद एल्यूमिनियम है, अच्छा बोरान है, गैलियम है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, थैलियम है। अच्छा ionic radius very previous class तो ask Neet examination, previous class Neet examination है, radius ionic radius है। अच्छा melting point में कोई दिक्कत नहीं है आपका, melting point में कोई दिक्कत नहीं, up to this कोई दिक्कत नहीं melting point में। अच्छा सर अब बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है आपको, टॉप टू बॉटम डिक्रीज है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट में देखो, मेल्टिंग पॉइंट में बैटिंग ऑर्डर है, अच्छा बैटिंग ऑर्डर है, अच्छा बैटिंग ऑर्डर मींस अच्छा बोरान विल कम फर्स्ट है, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट में बोरान विल कम फर्स्ट, देन एल्यूमिनियम है, देखो एल्यूमिनियम कम फर्स्ट है, देन इंडियम है,
अच्छा, देन सर थैलियम है, देन इंडियम है, then indium है, then gallium है. Gallium boiling point is nothing but only 30 degrees. So high temperature thermometers में, because boiling point and melting point में huge difference is there. देखो gallium 303 and this large difference is there. That's why gallium is used in high temperature thermometer में. अच्छा, melting point का आप देखो batting order है. अच्छा, बैटिंग ऑर्डर है, बोरान, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम. बोरान, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम. ये बैटिंग ऑर्डर आप ऐड करो, वेरी सिंपल था. बिकॉज देर में आज के क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का कोई डिफरेंस नहीं, अप टू बॉटम इंक्रीज होता है. अच्छा, व्हाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ द एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है, गिव द रीजन. बिकॉज एल्यूमिनियम क्लोराइड है एक्वेस सॉल्यूशन में क्या होता है, aluminum hydroxide with liberation of HCl. This is the reason why white fumes are appear. So this is a white dense fumes which are given in NCERT textbook in this questions. Now boron is unable to form BF63 minus ion. Explain. अच्छा, boron में there is no availability of d orbitals. अच्छा, BF3 minus is not possible. Which of the following is possible? Which of the following is not possible? This kind of question they may ask you. Which of the following is possible? Which of the following is not possible? Because previously asked question है, SiCl6 2 minus is not possible. But SiF6 2 minus is possible. This is question asked. This is previously 2020 NEET exam, 19 NEET exam. This kind of questions are asked. Like pH5 is not possible. अच्छा, PI4 is not possible है because more reducing character है. PBr5 is not possible है. Like questions है, they may ask you which of the following is possible, which of the following is not possible. It is there, right? चलो, it's not PB, sorry, PB, PB, pH5, right? And now very important है, heating at about 120 है, ये वाला 120 degrees है. ये बोराजोल है, बोराजोल है, इनऑर्गेनिक व्यंजन बोलते हैं. ये आयनिक फॉर्म में समटाइम देखो आस्क क्वेश्चन है, आयनिक फॉर्म में, डेल्टा आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म. सपोज हीट अबाउट 200 डिग्रीज है, तो बोरान नाइट्रेट आता है, बोरान नाइट्रेट व्हिच इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्राफाइट है. इनऑर्गेनिक ग्राफाइट भी बोलते हैं, which is called inorganic graphite. नेक्स्ट, ऑलमोस्ट देखो EN वैल्यू है एक्सेप्ट कार्बन है, रिमेनिंग ऑलमोस्ट सेम है, रिमेनिंग ऑलमोस्ट सेम. एंड रिएक्टिविटी आफ्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस है. 14 ग्रुप एलिमेंट्स में रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टू बॉटम, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम है. रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम है. चलो, अच्छा देखो ऑलरेडी ना, दिस इज प्रीवियसली आस्क्ड नीट का क्वेश्चन था, नीट 20 और 19 में क्वेश्चन पूछा. 6 large chloride ions cannot be accommodated with Si4 है. Like CCl4 never undergoes hydrolysis. Like questions are CCl4 and SF6 never undergoes hydrolysis. Undergoes hydrolysis. This kind of questions are there, right? अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन है. अच्छा, जनरली कार्बन ग्रुप में कैटेनेशन प्रॉपर्टी मोर है, बट विच इज नॉट ओबेइंग कैटेनेशन इज लेड है. वेरी इंपॉर्टेंट है, लेड शुड नॉट, लेड डज नॉट शो एनी कैटेनेशन है. अच्छा, कैटेनेशन का प्रॉपर कैटेनेशन का ऑर्डर है, प्रीवियसली आस्क्ड है, दैट्स व्हाई कैटेनेशन का ऑर्डर है वाला, राइट? व्हाट आर सिलिकॉन? सिलिकॉन में रिपीटिंग यूनिट है,
R2SiO is a repeating unit. Silicon is simply this here. This R, suppose I go for R2SiO is a repeating unit. Repeating unit in silicon. In silicon is hydrophobic only. But suppose whenever R3SiCl is given, this is terminating polymer. Terminating polymer होता है. Is called terminating polymer होता है. R3SiCl is terminating polymer होता है. Now, boric acid is a presence of polymer is a presence of SO because which are given in textbook में. अच्छा, boric acid is a H3BO3 is boron undergoes sp stabilization is a layer like structure अच्छा, presence of hydrogen bonding right? It is a Lewis acid they may ask so many questions this is not RNA acid, this is not boron stress, this is Lewis acid. Weak acid is a weak acid also. अच्छा, इसका basicity 1 है. They may ask so many questions अच्छा, thermodynamically most stable form of carbon is graphite only. Thermodynamically most stable. Purest form is a fullerenes only. अच्छा, pure suppose most stable is graphite है. अच्छा, purest is आजकल fullerenes होता है. अच्छा, fullerene में आपको देखो 60 C60 है, C70 भी था. ये सागर बॉल का है या रग्बी बॉल का है? इसमें 26 मेंबर रिंग है, 26 मेंबर रिंग है, 12 5 मेंबर रिंग है, 25 6 मेंबर रिंग है, 12 5 मेंबर रिंग है. इसे एरोमेटिक है. fullerenes सर एरोमेटिक है. fullerenes सर एरोमेटिक होता है, बट रिमेनिंग और नॉट एरोमेटिक है. thermodynamically most stable is graphite होता है. Now, ये सल्फेज केमिस्ट्री में ये फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन टर्म है. अच्छा, इन केस ऑफ सॉल्यूशन के लिए x/m इज इक्वल टू k into c power 1 by n. इन केस ऑफ सॉल्यूशन के लिए, इन केस ऑफ गैस के लिए x/m इज इक्वल टू k into p power 1. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, if temperature increases, physical absorption decreases, chemical absorption increases. That's why this is physical absorption के लिए लो टेम्परेचर में ज्यादा है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. हाई टेम्परेचर में देखो ये लो टेम्परेचर में ज्यादा है, हाई टेम्परेचर में लेस है. एंड ये ग्राफ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ है. एंड ये 1/n वैल्यू के बारे में दे विल आस्क यू. 1/n वैल्यू इज नथिंग बट 0.1 to 0.5. ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है. ग्राफ्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, ये ग्राफ में देखते हैं. अच्छा, देखो ये ग्राफ. अच्छा, ये 1/n वैल्यू है. देखो 1/n वैल्यू का रेशियो 0.1 to 0.5. दिस इज ग्राफ है. ग्राफ में दे विल आस्क क्वेश्चंस ओनली. अच्छा, लॉन्गिमर इज नॉट गिवन. लॉन्गिमर के लिए x/m इज इक्वल टू AP by 1 plus BP, but which are not given in NCERT textbook. लॉन्गिमर के लॉन्गिमर is not given NCERT textbook. Only friendly absorption is given है, but 1/n वैल्यू से देखो याद करो. 1/n वैल्यू से 0. अच्छा, ग्राफ याद करो, ग्राफ याद करो. And you must remember this tabular form है. अच्छा, invertase है, enzymes convert sucrose into glucose and fructose है. Zyme is converted into this. Just remember है, this kind of question they may ask you. Theoretical question they may ask you in organic chemistry, particularly, right? चलो, this table is very important for you. Just note करो. अच्छा, very important है. Before, because 2 days before and 1 day before is very useful for you to remember to याद करना. Very simplified. अच्छा, ये भी देने आस्क क्वेश्चन है. समटाइम्स चीज है, एग्जांपल फॉर व्हाट है, जल है. व्हाट इज जल है? लिक्विड सॉलिड इज जल है. अच्छा, मिल्क इज नथिंग बट व्हाट, एमल्शन है. अच्छा, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे में आस्क. फ्यूमाइन स्टोन इज एन एग्जांपल फॉर व्हाट, सॉलिड है, गैस इन सॉलिड है. अच्छा, दिस टैबुलर फॉर्म आल्सो. स्मोक इज एन एग्जांपल फॉर व्हाट है, पेंट इज एन एग्जांपल फॉर व्हाट है. सो वेरी सिंपल है. ये टैबुलर फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चंस है. Milk and fumine stone है, like cloud is aerosol है, which containing liquid in gas होता है. This tabular form is also very important for it.
ना कोलाइडिन कहता होता है, कोलाइडिन है, कोलाइडिन है। अच्छा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन है, कोलाइडिन 4% solution of nitrocellulose and alcohol ether and dried over formaldehyde is dried over, prepared by dried over by soaking with formaldehyde. अच्छा ये ऐड करना 4% mixture of nitrocellulose and alcohol and ether which are dried over formaldehyde solution is a colloidin. Colloidin which can reduce the pore size only. So alpha filtration is possibility there in case of colloidin solution. अच्छा ये दोनों बुलेट पॉइंट्स हैं, एक किसके लिए? टेंडल इफेक्ट के लिए, एक टेंडल इफेक्ट। Scattering of light through a colloidal solution is not particularly nothing but Tyndall effect only. The sky is appears like a blue, sea water is appear like a blue because of Tyndall effect only. Scattering of light through colloidal solution. अच्छा condition क्या है? Once in J examination conditions asked है. Diameter of the dispersive particle is not much smaller than the wavelength of the light used. Must be comparable size होना चाहिए. Wavelength of light used diameter also. The refractive index of the dispersive phase and dispersive medium should be larger magnitude only. मतलब Leophobic sol only exhibit Tyndall effect only, not Leophilic. Generally, Leophobic sol exhibit Tyndall effect होता है. Now this is very important because Hardy-Suzeri rule में, अच्छा what are positively charged salts है, what are negatively charged salts है. अच्छा hemoglobin is best example है, positively charged है. Starch है, gum, gelatin, clay, charcoal example for this is a. अच्छा देखो metal oxide, hydroxides के लिए positive है. Metal sulfide as always sulfide metals are example for negative charge. Basic dyes are example for positive line. Acidic dyes are example for. Actually very important है. They may ask the question directly. Suppose in order to coagulate it, in order to coagulation of the positively charged we are adding negative charged ions. Coagulation of negatively charged we can add positively charged electrolytes only. This is done. Hardy-Suzeri rule. According to this rule, directly proportional to charge and the ion only. Suppose in the coagulation of negative salt, the flocculating power is in the order only. If suppose positive, that's why previous time is important. Positive salt, the flocculating power is in the order of this one. Charge increases, anion charge increases is according to all this. Cation also charge increases. But you need to identify which of the following is given. Negatively charged is given. Positive charge is given. Next. अच्छा ये table is very important because most of the times are this kind of formulas that they're asking. Which are the following carbonate ore? Which are the following is oxide ore? अच्छा you did Malachite I think 2020 NEET examination में asked था. NEET 2020 ये question is asked है. Cuprite क्या होता है? To see the previous we can see the iron pyrites है ये fool's gold होता है. दोनों सब फुल्स गोल्ड्स होता है, फुल्स गोल्ड है दोनों का. हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडराइट है, एक्सेट्रा. So this kind of questions they may ask because which are given NCERT textbook, which are the following carbonate ore है, like sulfide ore है, etc. This is very important for you. अच्छा लीचिंग है, लीचिंग किसके लिए है? इधर गोल्ड है और सिल्वर के लिए. एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड है सिल्वर के लिए. अच्छा ये वाला सपोज सिल्वर है, सपोज बिकॉज़ आवर सिलेबस कंटेनिंग सिल्वर है. अच्छा ये जी CN टेकन ट्वाइस A कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. ये हाइड्रोमेटलर्जी कॉन्सेप्ट है. अच्छा ये वाला सिल्वर है, सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड ओवर हियर. सो लीचिंग एजेंट कौन है? दे आर आस्किंग द क्वेश्चन. लीचिंग एजेंट फॉर सिल्वर एंड गोल्ड के लिए क्या है? NaCN और KCN होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा what is they ask the question what is meant by copper mate है? Copper mate है. Cu2S plus unreacted FeS. Cu2S plus unreacted FeS is nothing but copper mate होता है. Which are the following copper mate? They ask the question. Copper mate क्या होता है? Cu2S and FeS unreacted है. This is called copper mate है यहाँ पे. अच्छा liquefaction is liquefaction is nothing but low melting metals like tin. tin गाने. ओके लेड गाने बिस्मत गाने टिन गाने बिस्मत गाने लेड गाने మనం యూజ్ చేస్తాం మన లిక్విఫేషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం. अच्छा क्यूपुलेशन इज यूज्ड फॉर सिल्वर के लिए, कूलिंग इज यूज्ड फॉर कॉपर के लिए. लाइक जोन रिफाइनिंग इज नथिंग बट अच्छा वेरी सिंपल है.
क्यूपुलेशन सिल्वर के लिए यूज करता है, बिकॉज दिस इज पोलिंग के लिए, जनरली पोलिंग के लिए हम कॉपर एक्सट्रैक्ट करता है। कॉपर एक्सट्रैक्ट करता है। अच्छा, जोन रिफाइनिंग के लिए जो सिलिकॉन गानी, जर्मेनियम, बोरान, गैलियम एक्सेट्रा, एक्स्ट्रा प्यूरिटी, दिस इज एक्स्ट्रा प्यूरिटी, एक्स्ट्रा प्यूरिटी मेटल जोन रिफाइनिंग। क्यूपुलेशन केस क्या है, पोलिंग है। अच्छा, डिस्टिलेशन के लिए क्या है? डिस्टिलेशन है जिंक, कैडमियम, mercury, दिस वोलेटाइल ग्रुप है, दिस वेरी गुड वोलेटाइल ग्रुप है। डिस्टिलेशन के लिए क्या होता है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्यूपुलेशन में मोर एक्टिव मेटल इज इंप्यूरिटी है, मोर एक्टिव मेटल इज इंप्यूरिटी है, मोर एक्टिव मेटल इज इंप्यूरिटी है। अच्छा, पोलिंग के लिए मेटल ऑक्साइड सर इंप्यूरिटी है, मेटल ऑक्साइड सर इंप्यूरिटीज है, राइट। अच्छा, बॉन्ड्स पोजीशन निकल के लिए वैन आर्किल इज आल्सो इंपॉर्टेंट है। वैन आर्किल इज जिरकोनियम है, टाइटेनियम है, एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन सर आस्क करेंगे जिरकोनियम है, टाइटेनियम के लिए, ये वाला मॉन्स प्रोसेस का है। वैन आर्किल प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ अच्छा, N2 गैस प्रिपरेशन है। अच्छा, N2 गैस प्रिपरेशन है, ये वाला N2 गैस प्रिपरेशन है सिंपली NH4N2 N2 plus H2O, but NH4NO3 laughing gas plus H2, डिफरेंस आप देख लीजिए एक बार, सोडियम नाइट्राइड टू सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, दिस इज आल्सो आई थिंक वी कैन सी सो मेनी ग्रैंड टेस्ट पेपर्स आर द क्वेश्चंस आर आस्क्ड है, अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग नाइट्रोजन। अच्छा, बट प्रीवियस लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट 5-star क्वेश्चन है, प्योर नाइट्रोजन इज obtained thermal decomposition of azide, sodium गाने, barium गाने, azide spin of sodium। So very important है, this is a very important है N2O के लिए। अच्छा, ये फंडा बहुत है, देखो, राइट। अच्छा, ये वाला कलर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेशन टेस्ट है, कलर्स आल्सो इंपॉर्टेंट है। Cu+2 का कंफर्मेशन टेस्ट भी ये कलर से होता है, ब्लू कलर है। अच्छा, सिल्वर के लिए व्हाइट पीपीटी है। अमोनिया प्रॉपर्टीज में वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, देखो ये कॉलम आप याद करो, समटाइम्स दिस कॉलम आल्सो यूज्ड ना, कलरलेस है, न्यूट्रल है, कलरलेस है, न्यूट्रल है, ब्लू सॉलिड है, N2O3 के लिए ब्लू सॉलिड है। अच्छा, ये ब्राउन गैस है, ये ब्राउन गैस है, ये भी कलरलेस गैस होता है, NO2, राइट। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस होता है ये वाला, राइट। N2O4, N2O5 आल्सो उधर न्यूट्रल है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस है, ये टैबुलर फॉर्म आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो PCl5 कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेगा, PCl3 हाइड्रोलाइसिस करेगा तो H3PO3 आएंगे, बट PCl5 कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का H3PO4 आएंगे, बट पार्शियल में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड आएंगे, बट कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में H3PO4 आएंगे। अच्छा, दिस इज एनहाइड्रस ऑफ H3PO3 is PCl3, एनहाइड्रस ऑफ H3PO4 is PCl5। अच्छा, I think recently in one grand test paper also this question asked PCl5 and oxidized SN into SN, because oxidizing agent also used है PCl5 का, it is also acting like oxidizing agent है, right। PCl5 PCl3 की equation organic chemistry में है था, so that's why I am not touching in organic chemistry over here, only inorganic chemistry में क्या important है। देखो each and everything में this is a common point है, one POH common है, one POH common है, the remaining है how many are there, this you have to go for it, very important है ये वाला, metaphosphoric acid, anything, so these are common, anyone suppose you can write anywhere, suppose H2H4P2O6 है, shall we write
P अच्छा कॉमन है, वन OH इज कॉमन, वन डबल बॉन्ड इज कॉमन, वन डबल बॉन्ड इज कॉमन, अच्छा वन OH is common, one double bond is common. Remaining you can check it. Remaining how many? Only 4 oxygens are there. अच्छा 5 oxygen है, अच्छा 6 है, अच्छा 7. Remaining you have satisfied. Phosphorus valency का 5 होता है. अच्छा ये साइक्लिक ट्राइमर होता है, ये साइक्लिक ट्राइमर होता है, मेटाफॉस्फोरिक साइक्लिक ट्राइमर होता है. अच्छा ये क्वेश्चन है, which of the following is having PP bonds and which of the following is not containing PP bond है. ये टेबुलर फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, आप ऐड करना, नेम्स भी ऐड करना. हाइपोफॉस्फोरस कौन है, ऑर्थोफॉस्फोरस कौन है, पायरोफॉस्फोरस है, हाइपोफॉस्फोरस है. ये नेमिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है. दे विल आस्क नेम है, दे विल आस्क which of the following is ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, सब बोलता है. अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इंपॉर्टेंट थिंग इज अच्छा बेसिटी है, H3PO4 is more basicity than H3PO3 than H3PO2. But very interestingly acidic nature है, H3PO2 is more acidic than H3PO3 than H3PO4. अच्छा रिवर्स रेजोनेंस होता है, रिवर्स रेजोनेंस होता है, हाइपर रेजोनेंस बोलते हैं वाला. अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, so many times asked this question. अच्छा just like O2, according to the MOT, just like O2, S2 is also molecule is a paramagnetic character. Just like O2, S2, anti-bonding orbital में unpaired electron है, paramagnetic character. Just like S2, just like O2, S2 is also paramagnetic character. Vapor phase of S2. अच्छा देखो, why I am writing this equation only? Sulfuric acid can oxidize carbon into CO2, sulfur into SO2. कोई दिक्कत नहीं. But ये वाला इनएक्टिव मेटल के लिए हाइड्रोनिक एसिड नॉट लिबरेट, SO2 गैस लिबरेट होता है. देखो ये इंपॉर्टेंट है. इनएक्टिव मेटल के लिए ये SO2 लिबरेट होता है. अच्छा वन थिंग यू रिमेंबर है, वन मोर थिंग यू रिमेंबर है, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 के लिए, HNO3 के एक्टिव मेटल है DHNO3 N2OS. अच्छा इनएक्टिव मेटल है DHNO3 नो लॉपिंग गैस है. मतलब आपको एक एग्जांपल है, ये जिंक एग्जांपल है, एक कॉपर एग्जांपल है, एक्टिव मेटल के लिए, इनएक्टिव मेटल के लिए. बट वेदर एक्टिव और इनएक्टिव अभी तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 आपका NO2 गैस आएंगे, आपका NO2 गैस आएंगे. ये भी इंपॉर्टेंट है. नाउ डेकेन्स प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट है वाला. डेकेन्स प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट है. नेम्ड रिएक्शंस है वेरी इंपॉर्टेंट डेकेन्स प्रोसेस में. अच्छा देखो, डाइल्यूट NaOH है, कॉन्सेंट्रेट NaOH है. डाइल्यूट के लिए ये वाला NaS, दिस डू an example for disproportionation reaction. These two are example for disproportion. Not only chlorine and bromine, iodine also gives disproportion, but fluorine never undergo disproportionation reaction. All these disproportionation reactions. अच्छा sometime the question they may ask me, bleaching powder का combination क्या है? Bleaching powder क्या होता है? All together is nothing but bleaching powder only. Combination of sodium hypochlorite है, chloride है, water है, nothing but this bleaching. NCERT में दिया ये bleaching powder का combination था. अच्छा we know what is the aqua regia? Aqua regia is nothing but 3:1 ratio of HCl and HNO3. An intermediate compound is formed in nitrosyl chloride. This intermediate compound is formed here. Tin dense reagent है, ये बोलता है tin dense reagent है. अच्छा गोल्ड के लिए वाला ऐसा होता है, गोल्ड व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वा रेजिया ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. अच्छा ये वाला H2PtCl6 ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. व्हेन गोल्ड एंड प्लैटिनम व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वा रेजिया व्हिच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. चलो अच्छा व्हेन रेडियम इज अंडरगोस डिसइंटीग्रेशन है, टू नोबल गैसेस का, वन रेडियम वन हीलियम. अच्छा प्रीवियस व्हिच आर द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आल्सो देता है.
And very important है how to prepare xenon fluoride, right, hexafluoride. In the ratio 1:2, 1:5, this 1:2 ratio, 1:5 ratio, 1:20 ratio, volume ratio. They'll ask the questions, right? Preparation medicine. And ये वाला भी very important. Xenon undergoes hydrolysis है. This xenon and O2 is formed. It undergoes hydrolysis है. Which are the following statement correct and incorrect है? Sometime previously in grand test also asked that. अच्छा ये fluorinating agents होता है. Fluorinating agents होता है which gives fluorine atom only. Cationic complex, anionic complex. Which gives fluorine atom only. Cationic complex है, anionic complex होता है. बस ये वाला देखो ये which can accept a fluorine है. Which can accept a fluorine है ये वाला. This is very important है. So many times asked this question in competitive examinations. अच्छा देखो xenon hexafluoride है. Partial hydrolysis gives this one. 2 moles gives this one. Complete hydrolysis gives the xenon trioxide. अच्छा this xenon tetrafluoride gives this is an example for disproportionation reaction. Disproportionation reaction. Disproportionation reaction का example है. Xenon tetrafluoride, but hexafluoride never undergo disproportionation reaction, right? चलो. अच्छा ये वाला xenon hexafluoride is a colorless explosive solid है. Whereas this is a colorless volatile liquid है. And some corner line questions also they may ask you. So I am telling you, xenon trioxide is a colorless explosive solid है. Whereas this is a volatile liquid होता है. अच्छा, this is a very important है. This is very important है. Cr+2. Can you tell Cr+2? Chromium is 3d5 4s1. Can you tell Cr+2 is nothing but 3d4. 3d4. अच्छा, suppose we know 3d3 is according to the d orbital splitting है. 3d3 is Cr+2 into Cr+3 is coming है. Then 3d3 है. अच्छा 3d3 क्या है? T2G में ऑफिल ऑर्बिटल्स है. So it is the most stable. अच्छा +3 इंच +2 to +3 increase of oxidizing agent है. Where oxidation type is acting like a reducing agent है. And Cr+2 converting to Cr+3 is oxidation है. अच्छा where oxidation type is acting like a reducing agent. Cr2 is a reducing agent. Whereas Mn+3 देखो 3d5 4s2 is nothing but Mn+3 is nothing but 3d4. अच्छा Mn+3 इंच Mn+2 है nothing but 3d5 है. अच्छा +3 to +2 reduction है. Where reduction type is acting like an oxidizing agent is very important. And moreover, one more thing is Cr+3 is a better reducing agent than Fe+2, which are given in NCERT textbook only. Then Fe+2 only. These statements are you might remember. And we know among 3D series first series transition series 3D series में the only copper is having positive SRP value because of high heat of atomization and low hydration energy. This is the reason. Actually, you remember this kind of points. Now, name the lanthanide series which is a known exhibit +4 oxidation. Generally, common oxidation series +4. Lanthanide के लिए common is a common oxidation series +3 but +4 है. Cerium है. Atomic number 58 है. अच्छा देखो, xenon के after xenon के बाद है 4f1 है, 5d1 है, 6s. Electronic configuration. So +4 is the most stable because it contains xenon configuration. अच्छा actinide contraction is greater from the element than lanthanide contraction है because lanthanides में n-2 f orbital, n-1 d orbital and ns orbital. अच्छा actinide में n-2 मतलब ये 4f है, ये 5d है, ये 6s है. बट ये देखो ये 5f है, 6d है, ये 7s है. इसका एनर्जी गैप लेस है, इसका एनर्जी डिफरेंस इज लेस है. That's why
it can participating more, right? More contraction possibility when compared to this. Achha, this kind of questions you have to practice. We discuss so many times. Achha, whenever this is a weak field ligand, weak field ligand, whenever weak field ligand, strong field ligand, strong field ligand. Achha, weak field ligand is nothing but outer electron is high spin complex होता है, high spin complex होता है, ये वाला low spin complex है, low spin complex है. Again same है, ये weak field ligand है, weak field ligand है, ये strong field ligand है, strong field ligand है, strong field ligand है, low spin होता है, high spin होता है. अच्छा, I think we discussed it in the classroom also. अच्छा, both are strong field ligand है, but देखो CO+3 के लिए मैंने 3D6 4S0 4P0 लिखा. अच्छा, D6 के लिए 4S है 4P है. अच्छा, 1 2 3 4 5 6. अच्छा, because of strong field ligand है, electrons are forced to pair up. Electrons are forced to pair up against the Wund's rule है, nothing but D to sp2 hybridization, sp3 hybridization. But Ni+2 3D8 है, 3D8 है. अच्छा, 4S0 4P0 4D0. Okay, 3D8 means we are unable to, this is 3D8 है, 4S 4P 4D, 4S 4P 4D, 4P 4D. अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8. But even though you have to against the Wund's rule, it create only one vacant d orbital, but we require 2 vacant d orbitals. So that's why it undergoes sp3d2 hybridization. This is a very important, very important. देखो ये वाला funda which are given in NCERT textbook है. Other than this, we know geometrical isomerism, optical isomerism, everything is. अच्छा, one more thing, important thing is platinum 2 complex है, palladium 2 complex है, gold 3 complex है, and CuNH3 taken 4 times plus 2. This complex है, irrespective of the strong and weak field ligand, always DSP hybridizations पे planar geometry. Similarly, like KMnO4, potassium dichromate, K2CrO4, like Fe4, FeCN6 taken thrice. These are colored. These are colored due to, not due to DD transition. It's charge transfer phenomena. Charge transfer. Here charge transfer from ligand to metal. Ligand to metal. Here charge transfer from metal to metal. Charge transfer from ligand to metal, but here metal to metal. Because of all due to charge transfer phenomena. अच्छा, देखो, Wilkinson catalyst is used for hydrogenation of alkene. अच्छा, cisplatin is anti. We know cisplatin. This is used as and means cancer curing. Cisplatin, cis isomer only. Achha, so many applications are there, but a few. Before going to examination, you remember a few. These are very important concepts in complex compounds. Thank you. In brief, we discussed before going to the examination. Thank you.